Hello guys, welcome to Stock Market Experiment. So the whole point of putting out this video is that let me just take you through the four key points that we are going to discuss in this video. So the first thing is that I have realized from my experience that there are only three key skills to learn in stock market. First is कहाँ पर घुसना है, what to buy, कौन सा शेयर बाय करना है. Second is कब घुसना है, when to buy it, and third is obviously कब निकलना है, because निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे लोगों को including I myself नहीं पता चलता है कि निकलना कब है. So that is when to exit the stock. Now what I've seen is on social media so many people पोस्ट के ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है, इसको ले लो, अभी ले लो, इतना रिटर्न बन सकता है, उतना रिटर्न बन सकता है. वो एक शेयर डाल के एक मैसेज में भाग जाते हैं. फिर वो 2-3 महीने बाद, 4 दिन बाद, जब कभी भी उनका मन होता है, वो वापस आते हैं. अरे हमने बोला था ये इस दिन पर इतना रिटर्न है, इसका बन चुका है, देखो वी आर राइट. But there is no sense of accountability because no one is maintaining kind of a virtual portfolio where people can actually go back and see कि हाँ यार इस बंदे ने तब बताया था और अब ये इतना रिटर्न दे रहा है. So that's what I planned. I'm actually planning to do is putting together a stock market experiment where I am going to test my hypothesis. Well, my hypothesis is uh, I'm going to use some strategies and some indicators to filter out stocks from whole NSE index, and then I will be adding that stock to my virtual portfolio, which is going to be here. I will just talk about it in a few minutes. But the whole point of putting this virtual portfolio in place is to see whether we are able to beat Nifty return in one financial year or not. So financial year बोलने से अभी थोड़ा लेट हो गया अपने को. We are starting in July. Today the date is 7th of July, and financial year started on 1st of April. But anyway, जैसे भी है जो भी है, अभी जितना टाइम बचा है उसमें हमें ये देखना है कि हम निफ्टी एंड ऑल ऑफ दीज मेजर इंडाइसेस उनके रिटर्न को मैच कर पाते हैं या बीट कर पाते हैं या जैसा भी है. तो हमारी पता चलेगा कि हमारी शेयर जो चूज करने की और एग्जिट करने की, गोइंग बैक टू दिस फर्स्ट स्टेप, थ्री की स्किल्स वो है कुछ काम की कि नहीं है, अभी हम सीखे हैं या नहीं सीखे हैं. And then there are going to be two approaches. I will be maintaining two portfolios. One is conservative, उसमें ज़्यादा stock add नहीं करेंगे. Third is, the second one is aggressive, उसमें थोड़े really add करेंगे. Let me now take you to the portfolio. So here I put together this Excel. It's in Google Sheet with these columns. So if we can just go through these columns. So first one is in and exited flag. So right now, today date is 7th of July, and the stock that I found worth adding here is JK Lakshmi at the price of 980. क्वांटिटी अभी कुछ भी हो सकता है, नहीं भी करते तो भी चल जाता, बट मैंने रखा 10 क्वांटिटी बिकॉज आई वांटेड each stock to be of roughly 10,000 rupees value. उससे थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है. अभी 10,000 है, 1 लाख है, वो मैटर नहीं करता, एक एक क्वांटिटी है उससे भी हो जाएगा. बट सबको थोड़ा हमें नॉर्मलाइज करके चलना पड़ेगा, और शेयर भी ऐड करेंगे तब मे भी कोई शेयर 5,000 का होगा तो उसके दो ही क्वांटिटी लेंगे. बिकॉज एट एंड ऑफ द डे आवर एलोकेशन विल बी ओनली 10,000 रुपीज टू ईच स्टॉक. एग्जिट प्राइस जब एग्जिट करेंगे तब उसको हार्ड कोड करके मैं यहाँ डाल दूंगा, बट अभी वो करंट मार्केट प्राइस ही ले रहा है. उस समय जब एग्जिट करेंगे तब ये वैल्यूज भी निकलेंगी, ये ऊपर की वैल्यूज भी निकलेंगी. वी कैन probably look at these values at later time whenever we are going to exit one. But कितने दिन होल्ड किया है, एवरेज होल्डिंग टाइम, टोटल रिटर्न कितना है, एवरेज रिटर्न कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, अभी 9800 ही है. एंड देन एट एंड ऑफ द डे वी विल हैव टू सी ये थ्रू दी स्टैट्स कि हमने निफ्टी के रिटर्न को, बिकॉज द होल पॉइंट इज टू मैच एंड बीट निफ्टी रिटर्न्स. बिकॉज अगर ये सब उठापटक करके भी अगर हम निफ्टी को नहीं कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा निफ्टी 20 ले लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड में रुपए डाल देना चाहिए, जैसा कि सब बोलते हैं. सो अभी ये प्राइस करेक्ट नहीं है. आई विल करेक्ट इट. आई डोंट थिंक दिस इज 22,462 on 1st of April 2025. Similarly, we will have mid cap Nifty
and other indices also. I will keep on adding more indices as and when I come across them. If you also feel like some indices should appear here, please feel free to suggest them in the comment section. So let's for today conservative aggressive दोनों में डाला है by the way JK Lakshmi अपन ने. But now let's also look at JK Lakshmi's chart on TradingView. That's the tool I use for technical analysis. So this is JK Lakshmi Cement. So you can clearly see this was previous breakout, but it's not relevant now. But we can see good it's following good trend lines. There is also this rounding bottom pattern, and this should break out from this trend line, and we should see a good move. That's what is my hypothesis. Right now we are on weekly candle, but let's also look at monthly. This is also so we have entered before breakout. That is something we should not do, but yeah, let's see. Daily में तो इतना कुछ समझ नहीं आता है because candles for me time frame that works better is weekly and monthly. Let's also look at fundamentals of JK Lakshmi. So मैं usually तीन चार नंबर ही देखता हूँ यहाँ पे. पी ऑब्वियसली सभी देखते हैं. ROC और ROE for me is important. So anything above 10 for me is good. All of these numbers are, yeah, I mean, I usually don't look at fundamentals much. I prefer to go with technicals. But मेरे लिए ये तीन चार नंबर important है. एक PE है 10.4 is good number. This is almost 9 ROE, which is good. Secondly, I always look at investor information. So here we can see in investor information, it is always better to look at FIs and DIs. 11.93 से 12.06 हुआ है तो definitely FII ने थोड़ा बढ़ाया है अपना. लास्ट क्वार्टर में मार्च 25 23 से 28 तो कुछ इतना है नहीं. पब्लिक ठीक ठाक है 16 है. फॉर मी FIIs and DIs holding should I mean that is a portion that I usually look at. PNL देख लेते हैं अपना. तीन चीजें ही देखता हूँ मैं. एक ROC ROE, ये अपना इन्वेस्टर का कितना क्या ब्रेकअप है, देन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चल रहा है. तो दिस इज ऑल्सो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1052 हाईएस्ट था. 864 थोड़ा कम हो गया बट ठीक है. नेट प्रॉफिट भी लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा था. लास्ट टू लास्ट ईयर ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया बट ठीक है. I would rely on chart pattern more. And then let's see, I mean, क्या होता है इसका. So similarly, I will keep on adding stocks as and when I come across them. And then we will see. इसको भी थोड़ा सा मुझे अभी काम बाकी है. I have to because Google Finance function में directly mid cap Nifty के नहीं है. If any of you come across a method to pick up live prices for these indices, just let me know in comments. इन सब का कर देंगे. और इंडाइसेस भी I have a plan to add them like Alpha 50. वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा चलता है. So we will enter as many indices as possible. थोड़ा ये स्टैट्स वगैरह बनना स्टार्ट होंगे. टोटल स्टॉक्स कितने हैं, इन ट्रेड कितने हैं, एग्जिटेड कितने हैं, बेस्ट परफॉर्मर कितना है, वर्स्ट परफॉर्मर कौन है, क्या है. ये सब चीज़ें थोड़ा आएंगी जब एटलीस्ट 5 6 10 स्टॉक हो जाएंगे अपने. So we will see. I think that's about it. Whenever there is an update to this, I will be posting a video. Next, इसमें कुछ डाउन मूव आता है तो भी करूंगा. इसमें अप मूव आता है तो भी करूंगा. कोई डिसेंट आता है, कोई नया स्टॉक आता है तो भी आई विल कीप ऑन एडिंग द videos to my channel. Thanks. See you in next video.